Hello kids, welcome to your geography class with your mentor Aprajita. And today we are going to start our class 6 geography chapter number 15, globe. Globe के बारे में पढ़ेंगे the model of the earth, जो कि earth का एक model होता है. Fine? So here we start, and in this chapter we are going to read about globe, latitudes and longitudes, meridians of longitude, ascertaining location of a place by latitudes and longitudes. Latitudes और longitudes से कैसे एक place के location को ascertain किया जाता है. Longitude and time. We start with globe. A true spherical representation of the earth is known as a globe. Earth का जो एक true representation है उसे कहा जाता है globe. See, this is a globe. Earth की तरह ही होता है, देखिए. It represents the shapes and sizes of the continents and oceans and helps to know distance and direction. वो क्या represent करता है? Shapes और size, continents का क्या कैसा shape और size है, और oceans के बारे में भी बताता है, and helps to know the distance और directions का भी पता लगता है हमें इस globes. We can see globes of different sizes. अलग-अलग sizes के होते हैं. बहुत बड़ा globe भी होता है, छोटे-छोटे globes भी होते हैं. Some globes can be folded and are easy to carry. और कुछ globes जो हैं वो fold भी हो जाते हैं और उसे carry करना बहुत easy हो जाता है. There are some globes in the form of balloons which can be inflated to study. Right? Fact to know: the distance between two poles, not two poles, दो poles हैं हमारे, North Pole and South Pole, through the center of the Earth is 12,742 kilometers. जो डिस्टेंस है इन दो पोल्स का सेंटर से अर्थ के वो है 12,742 किलोमीटर्स. दिस इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ. अ ग्लोब इज सेट सो ऑन द स्टैंड दैट इट कैन बी रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस पोल्स. और ये ग्लोब जो होता है वो स्टैंड पे फिक्स होता है, उसको रोटेट किया जा सकता है अपने उसकी एक्सिस पे. द नीडल ऑफ द ग्लोब passes through 2 points. These points are called the North Pole, the upper part, and the bottom point is called the South. This is North Pole and this is the South. Okay? There is a grid of horizontal and vertical lines on the globe. Globe में horizontal और vertical lines का grid होता है. These lines intersect one another at different points. अलग-अलग points पे intersect काटते हैं एक दूसरे. All these lines and poles are imaginary. और जितने भी lines और poles यहाँ पे होते हैं इस globe में वो सब imaginary हैं. Latitudes and longitudes. Latitudes are the horizontal imaginary lines. Now see, ये जो horizontal, this is horizontal. You all must be knowing horizontal is like this and vertical is like this. Okay? So जितने भी horizontal imaginary lines हैं and the longitudes are the what latitudes जो होते हैं वो horizontal imaginary lines होते हैं, और जो longitudes होते हैं वो vertical imaginary lines. So horizontal is latitude and vertical is longitude. Parallels of latitude. A horizontal line going midway between North Pole and South Pole is called the equator. जो horizontal line के बीच में जाता है North Pole से South Pole की तरफ उसे कहा जाता है equator. The longest latitude. और ये होता है सबसे लंबा लैटिट्यूड. जो इक्वेटर है इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड. कि लैटिट्यूड जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स. अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है ये इक्वेटर. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. द अदर लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर एंड आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज एज दे मूव टुवर्ड्स द पोल. देखिए जैसे पोल की तरफ जाता है ये डिक्रीज होता जाता है इसका हॉरिजॉन्टल लाइंस का साइज जो है. So the latitudes at the poles are the smallest and represented by mere points. See, they are the smallest at the poles. Poles पे बिल्कुल छोटे हो जाते हैं. The equator is marked 0 degree. Equator को 0 degree mark किया जाता है and the poles are marked 90 degrees. One latitude is drawn at every degree, so it means that there are 90 latitudes in each of the northern hemisphere and the southern hemisphere. The latitudes in the northern hemisphere are marked N.
90 degree N. Okay, and those of southern hemisphere are marked 90 degree south. Now important latitudes. कौन सी हैं? Latitudes means horizontal. Equator. The equator, the longest latitude, divides the earth into two halves. It is marked 0 degree और उसको 0 degree mark किया जाता है और अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. Now Tropic of Cancer. It is located at an angular distance of 23.5 degree north. The sun is right over this latitude on 21st June. और इस latitude पे Tropic of Cancer जो है उस पे जो sun होता है बिल्कुल टॉप उसके ऊपर होता है right over this latitude. कब? 21st June. It passes through India. Right? Now, Tropic of Capricorn. It is located at the angular distance of 23.5 degree south. The sun is right over this latitude. अब इस latitude पे sun कब होता है? On 22nd December. Now comes the Arctic Circle. It is located at an angular distance of 66.5 degree north. And Antarctic Circle, it is located at an angular distance of 66.5 degree south. Now comes the heat zones. We can divide the earth into three zones. The earth है उसको तीन zones में divide किया जाता है. The hot and or the torrid zone. Hot या torrid zone. This area lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. अब यहाँ देखिए. This is North Pole. This is South Pole. Fine. हमने सबसे पहले क्या ये जो Arctic Circle था देखिए ये Arctic Circle है यहाँ पे and this is Antarctic Circle. साउथ में 66 डिग्री साउथ एंड 66 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल. देन दिस इज द इक्वेटर. फाइन, 0 डिग्री ये इक्वेटर है. अब हॉट और टॉरिड जोन कौन सा है? इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. The sun rays fall vertically on this zone and receives the maximum heat. और sun rays जो है वो vertically इस रीजन पे पड़ती है इस जोन पे और हम मैक्सिमम हीट. द मॉडरेट और द टेम्परेट जोन. दिस एरिया लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. दिस एरिया रिसीव्स slanting sun rays and is neither very cold, hot or not very cold. The cold or the frigid zone. देखिए कोल्ड और फ्रिजिड जोन कौन सा है? दिस एरिया लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल. देखिए आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में ये हो गया नॉर्थ फ्रिजिड जोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये हो गया नॉर्थ फ्रिजिड जोन और ये हो गया साउथ फ्रिजिड जोन. The sun rays are very slanting in this zone, which is the coldest part of the earth. और जो सन रेज है बहुत ज्यादा स्लैंटिंग इस पे पड़ती हैं तो ये सबसे ठंडी जगह है. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. द मेरिडियंस ऑफ अब लॉन्गिट्यूड्स क्या है? वर्टिकल लाइंस. द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर द वर्टिकल लाइंस दैट जॉइन द टू पोल्स. ये वर्टिकल लाइंस दोनों पोल्स को जॉइन करती हैं. All longitudes are of the same length. सबकी लेंथ एक जैसी है. There was a consciousness among different countries that the longitude passing through Greenwich should be named the prime meridian. और ये सभी एक सबका कॉन्शियस था सब कंट्रीज का ये जो लॉन्गिट्यूड जो पास होती है ग्रीनविच से उसका नाम प्राइम मेरिडियन है. एंड इट शुड बी गिवन द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री. कौन सी वैल्यू? 0 डिग्री जो इक्वेटर को 0 डिग्री इक्वेटर को भी कहा जाता है. Now, fact to know, the British Royal Observatory is located at Greenwich near London. British Observatory जो है Royal Observatory वो Greenwich में है. The maximum distance between any two meridians is at the equator, about 111 kilometers. The prime meridian divides the Earth into two hemispheres. अब जो prime meridian है वो Earth को two hemispheres में divide करती है, Eastern Hemisphere and the Western Hemisphere. There are 360 longitudes, 180 in the Eastern Hemisphere and 180 in the Western Hemisphere.
The longitude of 180 is the same line from both sides, so it is not marked east or west. Same lines होती हैं उसकी, तो उसे east या west mark नहीं किया जाता. Ascertaining location of a place by latitudes and longitudes. Both of latitudes and longitudes help us to know the position of the place. Latitudes और longitudes दोनों की मदद से हमें place की एक जगह की position पता चलती है. When we know the latitude of a place, we cannot know its exact location. For example, Kohima in Nagaland and Barmer in Rajasthan are located on the same latitude. दोनों एक ही latitude पे located, 26 degree north, but they are situated very far from each other. लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत दूर. But when we say that Kohima is located at 26 degree north and 96 degree east, it becomes clear. जब हम नॉर्थ ईस्ट दोनों डायरेक्शन का पता लगाते हैं तब ये क्लियर होता है that we are talking only about Kohima, not Barmer. Fine, children? Now, difference between latitudes and longitudes. दोनों में difference क्या है? First, we'll read about latitudes. Okay, simultaneously हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे. Latitudes and longitudes. Latitudes are horizontal lines. Fine. अभी हमने पढ़ा कि जितने भी horizontal lines हैं वो latitudes and longitudes are vertical lines. Latitudes horizontal lines हैं और longitudes vertical lines. The length of the latitudes decrease towards the poles, the longest being the equator and the smallest being the two poles. जो length of latitude है वो कम होता जाता है poles की तरफ जाता है और सबसे लंबा जो है लैटिट्यूड वो है इक्वेटर और वो दोनों पोल्स पे सेम. ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ, दे कन्वर्ज एट द पोल्स. और सारे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है वर्टिकल लाइन से वो सेम इक्वल लेंथ की. नाउ लैटिट्यूड्स हेल्प अस टू नो द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस. लैटिट्यूड से एक जगह का टेम्परेचर के बारे में पता चलता है. लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस टू नो द टाइम ऑफ अ प्लेस और लॉन्गिट्यूड से हमें एक जगह का टाइम का पता चलता है. Longitude and time. The earth rotates on its axis and takes about 24 hours in one rotation. एक rotation के लिए 24 hours लगते हैं. As 360 longitudes are drawn on the earth, the sun faces these longitudes. अब एक earth पे 360 longitudes हैं, तो ये जो sun है इन longitudes को face करता है. One by one, once in a day. One by one ये जो सन है ये फेस करता है इन लॉन्गिट्यूड्स को. As the earth rotates 360 degree in 24 hours, it rotates about 15 degree in 1 hour or 1 degree in every 4 minutes. Thus, if it is 12 o'clock noon at 100 degree east now, अभी अगर 100 degree east में 12 o'clock noon है, it will be 12 o'clock noon at 115 degree east after 1 hour from now, and it was 12 o'clock noon at 85 degree east 1 hour ago from now. इस तरह से time calculate किया जाता है. It also follows that the longitude just opposite it will have 12 o'clock midnight. और just उसके opposite का जो longitude होगा वहाँ पे 12 o'clock midnight. Now, fact to know: the exact time that the Earth takes to rotate once on its axis is 23 hours 56 minutes and 4.091 seconds. Okay, children? Now, local time. By local time of a place on a certain longitude means that it is exact 12 o'clock noon when the sun shines just over. अब local time का मतलब क्या होता है? एक certain longitude में मतलब अगर 12 o'clock noon है तो sun जो है बिल्कुल सिर के ऊपर है. All places on this longitude will have the same time. Now, the standard time. What is the standard time? There are many countries which cover many longitudes. बहुत सारे countries हैं जो बहुत सारे longitudes यहाँ पे cover. If each of its places starts to observe the local time, it would create a lot of confusion. The local time देखा जाए तो बहुत सारा confusion हो जाएगा. India stretches from 68 degree east to 97 degree east, so it should have at least 3 local times, which would create a lot of confusion.
In order to alleviate this confusion, a standard time is adopted. अब इस confusion को दूर करने के लिए एक standard time अपनाया जाता है. In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian. अब जो longitude इंडिया में 82.5 degree east का जो longitude है, उसको एक standard meridian की तरह treat किया जाता है. The local time of this longitude is taken as the standard time for the whole country. और इस मेरिडियन, इस स्टैंडर्ड, इसका जो टाइम है, इस लॉन्गिट्यूड का जो टाइम है, उसको एक स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के लिए लिया जाता है एज अ स्टैंडर्ड टाइम. दिस टाइम इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST. The Indian Standard Time is 5 hours and 30 minutes ahead of the Greenwich Mean Time. जो GMT है, उससे 5 hours 30 minutes ahead है हमारा Indian Standard Time. It means when it is 12 o'clock noon at Greenwich, it will be 5:30 p.m. in India. इसका मतलब क्या हुआ कि जब ग्रीनविच में 12 o'clock noon होगा, तो इंडिया में 5:30 p.m. होगा. Fine. When a cricket match starts at 10 a.m. in London, London में जब 10 a.m. पे cricket match start होता है, we can view it live on television at 3:30 p.m. वही 5.5 hours का difference. Okay, children? Now, the important facts. A globe is a true spherical representation of the Earth. The parallels of latitude and are parallel horizontal lines drawn on the Earth north-south. The equator being the longest latitude. Okay, longest latitude क्या है? Equator. The heat zones indicate the temperature zones of the Earth. The meridians of longitude are vertical lines converging at the poles and indicate time. जो meridians of longitude हैं, vertical lines जो हैं, वो converge होती हैं poles पे और हमें time दिखाते हैं. The grid of latitudes and longitudes assists to ascertain the location of a place on a globe or a map. 1 degree of longitude shows a difference of 4 minutes in time. Longitude का 1 degree जो है वो 4 minutes time का difference दिखाता है. The standard time is set for the whole country according to its relative position to the prime meridian. The Indian Standard Time is ahead of Greenwich Mean Time by 5 hours and 30 minutes. Ahead Indian Standard Time, Greenwich times. Okay? Now children, the exercise to do objective type questions. Take the right option. The horizontal lines are called dash. जो horizontal lines होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? Longitudes, latitudes, grid. They are known as the latitudes. The longitudes are the dash lines on a globe. कैसी lines होती हैं longitudes? Vertical, horizontal, none of these. They are the vertical lines. The dash zone is the hottest zone. कौन सा zone सबसे गर्म zone होता है? Frigid, temperate, torrid. It's the torrid zone. In India, the longitude of dash is treated as the standard meridian. 81.5 degree east, 84.5 degree east, 82.5 degree east. 82.5 degree east is treated as the standard meridian in India. GMT is dash of IST by 5.5 hours. जो Greenwich Mean Time है, वो Indian Standard Time से 5.5 hours क्या है? Ahead, behind, none of these. Behind. Indian Standard Time जो है वो 5.5 hours ahead है. So GMT is behind. Now children, we'll fill in the blanks. Latitudes are dash lines while longitudes are dash lines. Latitudes are horizontal lines while longitudes are vertical lines. The equator divides the earth into 2 equal parts. Dash is the longest latitude. Equator is the longest latitude. 1 degree of longitude shows a difference of dash in time. कितना difference दिखाता है 1 degree of longitude? 4 minutes of time.
The local time is ascertained as per the dash sun, as per the position of the sun. Position of sun. Write T for true and F for false. A globe can rotate on its axis. True. The Tropic of Cancer passes through India. Yes, this is true. The intersection of longitudes and latitudes forms a grid. Yes, this is also true. A grid बनता है जब intersect होते हैं latitude और longitude. The smallest latitude is the Tropic of Capricorn. False. All places on a longitude have the same time. No, false. So children, I hope you had a good time reading this chapter because it had many interesting things. बहुत सारी interesting चीजें पता चली इसमें. So go through this chapter again, read it again very nicely, and we'll meet soon with a new chapter. Till then, be happy, stay blessed. Bye.